Hi students, good evening to all of you and welcome my channel. Today I am going to discuss one of the important topic of biology, that is biological classification. So first of all, what is biological classification? Biological classification is the scientific ordering of organisms into a hierarchical groups, series of groups. So the definition of that biological classification is scientific ordering of organisms into a hierarchical series of groups. It is called as biological classification. Ordering of organism in a scientific manner so that it can be well known to all individuals living all over the world. So before going detail to that of biological classification, we are going to study the history of that biological classification. ताले पिले माने प्रथमे देखिबा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जदि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रा हिस्ट्री देखिबा ताले इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर एहा आरंभ हेछि and as per Vedic literature about 740 plants and 250 animals they are separated. Vedic literature it reveals about 750 species of plants and about 250 species of animals. 740 species of plants and 250 species of animals separated from the very beginning of that Vedic literature. Later on, Susruta Sahita, it is described about that स्थावर and जंगम. पिले माने स्थावर अस्तावर संपत्ति को जाए. स्थावर माने those are fixed, immovable. Jangam means which are movable. So it includes that living organisms and separated it as स्थावर and jangam, immovable and movable. As you know, plants are fixed. They are not movable and animals are movable. So these two categories done by that Susruta Sahita. Then Parasar classified angiosperms into dicotyledon and monocotyledon. पिले माने सेते बेले Parasar dicotyledon monocotyledon कहि नथिले दुई मातृका आ एक मातृका. पिले माने प्रथमे जानिबा दरकार कटिलिडन काहको कुहा जाय. व्हाट इज कटिलिडन? पिले माने कटिलिडन कहिले द रिजर्व फूड मटेरियल दैट स्टोर्स विदिन द सीड व्हिच हेल्प फॉर द सीडलिंग और बेबी प्लांट फॉर इट्स डेवलपमेंट. ताले मंजीरु गजा उठिबा पई ता भितर थिबा संचित खाद्य पदार्थ को कटिलिडन कुहा जाय. एवं पराशर कहले जे एंजियोस्पर्म बा जेउ मानकर फूल थाए गछ गुड़िकर बा फूल लागि थिबा गछ गुड़ी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि. वन इज मोनोकोटिलिडन and dicotyledon. पिले माने मोनोकोटिलिडन है एक बीजपत्री एवं डाइकोटिलिडन है दुई बीजपत्री. सेहि थि पराशर कहले एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स आज दुई मातृका एवं एक मातृका. सो दुई मातृका कहले डाइकोटिलिडन बा द्विबीजपत्र एवं मोनोकोटिलिडन कहले एक बीजपत्र. Then later on, Hippocrates, the father of medicine,
and Aristotle, they also separates and categorized all living animals into four different groups, that is insect, fishes, birds and whales. These are classified by Hippocrates and Aristotle. Both of them they classify. Then Theophrastus later on, he described about 480 plus species of plants in his book Historia Plantarum. And Theophrastus is also regarded as father of botany. Then Pliny introduced the system of artificial nomenclature. Artificial nomenclature को Pliny introduce कले. तापरे John Ray coined the word species. पिले माने classification रो smallest unit होची species एवं ये species word termed by John Ray. John Ray coined that word species and described plants and animals in his book Historia Generalis Planta. जेहेतु एनिमल और प्लांट मान को ये एक्सप्लेन करथिले सेपरेट करथिले तंकर बुक रो नाम होची Historia Generalis Planta. Then later on, the most important one, that is Carlos Linnaeus, he developed Historia Animalium and specifies certain organisms put in his book. And later on, the binomial classification is also made by Carlos Linnaeus, which explains the scientific name of organism into two words. One is the first word is generic name and the second one is species name. The generic name starts with a capital letter and the species name, which indicates the particular individual, it starts with small letters, small alphabets. And the binomial nomenclature proved that it is worldwide accepted for any living species all over the world, and commonly it can also be identified by all group of peoples that living in different areas all over the world. So that binomial nomenclature provides the scientific name of a particular organism which is underlined during that handwritten, but it is italicized name. Later on, the five kingdom classification starts. The kingdom classification starts with two kingdom classification, three kingdom classification, four kingdom classification, five kingdom classification, the important one, also six kingdom classification are there. पिले माने हम प्रथमे देखिबा जदी first two kingdom classification, that two kingdom classification was first observed by, described by Carlos Linnaeus as plants and animals. Second one is three kingdom classification. It was proposed by Haeckel. Haeckel को propose करिथिले एवं classification करैले कोन कोन protista, plantae and animalia. Protista, plantae and animalia. Thirdly, पिला माने प्रथमे गला दुई किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by Carlos Linnaeus एवं तांको अनुसार सेही टू किंगडम क्लासिफिकेशन रे रहिले कोन कोन प्लांट्स एंड animals. Then three kingdom classification, that includes that protista, plantae and animalia, it was proposed by Haeckel. Then four kingdom classification, it was proposed by Copeland, and that classification includes Monera, protista, plantae and animalia. Monera, protista, plantae, animalia. Then
later on the five kingdom classification was proposed by R.H. Whitaker. It is the important one of that kingdom classification, that is five kingdom classification. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कले R.H. Whitaker एवं सी जो पांचटा किंगडम विभक्त करे एक रहला मोनेरा, दुई रे प्रोटिस्टा, तीन रे फंजी, चार रे प्लांटाई, पांच रे एनिमालिया। एई भली पांच किंगडम बा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड। Later on, the sixth kingdom classification starts by Carl Woods. एवं ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन रे रहिला आर्किबैक्टेरिया, यूबैक्टेरिया, प्रोटिस्टा, देन फंजी, देन प्लांटाई, देन एनिमालिया। आउ थरे कहि दउची बिले माने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जहा कार्ल वुड्स प्रपोज करिथिले तांको अनुसार छटा किंगडम हला आर्किबैक्टेरिया। पिले माने आर्किबैक्टेरिया विषय रे टिके सुनो। Those bacteria can survive at extreme condition. Then eubacteria, protista, fungi and plantae, animalia. So these six kingdom classification. Pile mane five kingdom classification, which is the important one proposed by that R.H. Whitaker. According to him, ताहले को बेसिस रे किंगडम क्लासिफिकेशन करा जायछि ताहा जानिबा। सो द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल रो स्ट्रक्चर, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेकंड वन इज पिले माने प्रोकैरियोटिक कहले प्रो रो मीनिंग हला प्रिमिटिव बा फास्ट, कार्यन रो मीनिंग हला न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक माने प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंशिएंट न्यूक्लियस थिबा सेल। ताले स्ट्रक्चर ऑफ सेल अनुसार दी प्रकार रो गोटे हला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेही अनुसार द्वितीय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पिले माने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहले ताहा केतेटा सेल रे तयारी हेछि। इफ इट इज फॉर्म्ड ऑफ वन सेल और सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इफ इट इज मेड ऑफ मेनी सेल्स, then it is called as multicellular organisms. And the third important basis by which Whitaker classified that five kingdom classification, that is mode of nutrition. खाद्य ग्रहण करिवार प्रणाली, केमिति खाद्य ग्रहण करूछि, whether it is autotroph, whether it is heterotroph. So by these three bases, फर्स्ट वन इज आउथर कहूछि पिले माने सुनो ए तीनटा बेसिस रे व्हाइटाकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को तयारी कले। प्रथम हैला स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ताहा प्रोकैरियोट किंबा यूकैरियोट। द्वितीय हैला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ताहा यूनिसेलुलर हैला किंबा मल्टीसेलुलर। एवं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ए तीनोटी बेसिस अनुसार फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तयारी करा गला। सो दिस इज the basis of five kingdom classification. वर्तमान हमें देखिबा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रो प्रत्येक किंगडम। पिले माने फर्स्ट किंगडम हैला किंगडम मोनेरा। फर्स्ट किंगडम मोनेरा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रे प्रथम किंगडम हैला किंगडम मोनेरा। पिले माने Monera gudico, the Monerans, the animals include this kingdom, they are called as Moneran. Monera रे जो माने include करा जाय छथि ताको कहला गला Monerans. Monerans. So this kingdom Monera is characterized by प्रथम हैला these are unicellular prokaryotes, simplest organization. First point है, first character है, these are unicellular organisms with simplest organization.
जेहेतु गोटे कोषरे तैयारी तेणु एमानकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप सो सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स पिले माने टिकिए पूर्व कहतली प्रोकैरियोट माने दोज ऑर्गेनिजम्स हैव बीन मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स ताले गोटे सेल रे तैयारी हेथिबा यूनिसेलुलर ताको कहले प्रोकैरियोट माने प्रिमिटिव इट इज वेरी प्रिमिटिव मेड ऑफ वन सेल simplest organization so we can tell it is unicellular ताले को एनिमल माने आ भीतर अछंती unicellular prokaryotes and simplest organization is there पिले माने next point है if we observe that cell wall the cell wall is non cellulose cellulose नहीं cell wall रे एवं it is made up of cell wall without cellulose or without cellulose ताहले सेल वाल कोथिरे तयारी it is formed of polysaccharides formed of polysaccharides and amino acid पिले माने मोनेरा मानकर सेल वॉल रे सेलुलोज नाही नॉन सेलुलोज सेल वॉल and that cell wall is made up of that polysaccharides and amino acids. The third important point is organelles are not membrane bounded ताहले membrane bound organelles absent पिले माने membrane bound organelles are absent एवं ये जेहेतु प्रोकैरियोट nuclear membrane is also absent nuclear membrane is also absent पिले माने सेल ऑर्गेनेल गुडी को मेम्ब्रेन बाउंड नुहो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट सेइथि बाई प्रोकैरियोट मानकर न्यूक्लियस को कहा जाउची इनसिपिएंट न्यूक्लियस पिले माने नेक्स्ट वन इज नेकेड सर्कुलर डीएनए आर डीएनए गुडा कहला नेकेड circular DNA without histone protein पिले माने DNA हैला नेकेड सर्कुलर DNA एवं DNA is without histone protein जदि हमें राइबोसोम को स्टडी करबा बा ऑब्जर्व करबा इट कंटेन्स दैट 70s टाइप ऑफ राइबोसोम सो राइबोसोम इज 70s टाइप पिले माने 70s टाइप पहले 50 plus 30s व्हिच विल बी लेटर नेक्स्ट चैप्टर रे तक डिस्क्राइब करा जिवो देन राइबोसोम हला 70s टाइप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट अछि नेकेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन पिले माने फ्लैजेला डज नॉट शो दैट 9+2 अरेंजमेंट इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट पिले माने फ्लैजेला कहले तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इट इज ए व्हीप लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइजेस फ्रॉम द बॉडी चाबुक भलिया गोटे स्ट्रक्चर जहा लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एवं ए प्रोकैरियोट मानकर मूवमेंट लोकोमोशन पई सहायता करे से फ्लैजेलम जति को स्पीशीज रे अछि ए किंगडम रे इट इज डू नॉट हैविंग दैट 9+2 अरेंजमेंट पिले माने 9+2 अरेंजमेंट कहले if we cut a small piece of that flagella
transverse of section of that flagella shows that 1 2 3 like this. 9 double peripheral fibrils with 2 central fibrils, and it is enclosed by a cytoplasmic or protoplasmic sheath. आकु कहती 9+2 arrangement. एवं मोनेरान मानक ठारे जदि को स्पेसीज रे फ्लैजेला अछि दे लैक दैट 9+2 arrangement. पिले माने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स. मोनेरान किंगडम रे बा किंगडम मोनेरा रे थिबा केतेक ऑर्गेनिज्म मानक ठारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट गुडी का थाए. And that photosynthetic pigment पिले माने जानि छ photosynthetic pigment अछि माने it undergo that process of photosynthesis. Then nutrition is autotrophic, heterotrophic, parasitic. पिले माने autotrophic nutrition कहले पुनी nutrition काहे को कहंती. Simply it is the intake of food into the body and corporate it for metabolic activities. ताले ए lower grade organism मानकर nutrition होची autotrophic nutrition माने chlorophyll must be there বা photosynthetic pigment must be there so that it can synthesize that carbohydrated food by the process of photosynthesis. Kimba heterotrophic, it can depend other organisms for their food, and some of them are parasitic. Parasitic माने परजीवी आकार रे अन्य प्राणी बा अन्य जीव मानक ऊपर खाद्य पई निर्भर करନ୍ତି. And it's one of the important character that chemosynthetic nutrition. It can also draw nutrition from chemical substances. It is seen in some cases, not in all. And the cell division occurs in monerans by amitosis, and the example is bacteria. पिले माने bacteria रे आमे कहि परिबा Diplococcus bacteria, Bacillus bacteria इत्यादि. So these are the general characters that are present in the organisms that belongs to kingdom Monera. Then the second is, first one is Monera, second one is protista. ताले पिले माने वर्तमान देखिबा what are the characters of that kingdom protista. Second one is protista. The kingdom protista has the characteristics of that unicellular and eukaryote organisms. So it includes unicellular and eukaryotic organisms. Eukaryotes. पिले माने यूरा मीनिंग हैला ट्रू, कार्यन रो मीनिंग हैला न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस थिबा unicellular organism गुडी का प्रोटिस्टा अंतर्भुक्त. Next character is cell wall is made of cellulose. Cell wall is made of cellulose. Cell wall theory is cellulose रे true nucleus with more than one chromosome. पिले माने जानि छ chromosomes appear in pair. ताले आ पाखरे true nucleus अछि. True nucleus is present. पिले माने true nucleus एंति टाइप हो जाउची. It is bounded by nuclear membrane. Nuclear membrane अछि. तेणु true nucleus with more than one chromosome. बा गुणसूत्र एक रु अधिक अछि. मोनेरा इनसिपिएंट न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नथिला, आर किंतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि. तेणु ट्रू न्यूक्लियस विथ मोर देन वन क्रोमोसोम. पिले माने मोनेरा रे आमे पढिथिले नेकेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, बट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा डीएनए
present with histone protein or DNA associated with histone protein. DNA associated with histone protein. Next important character is 80S ribosome. 70S type of ribosome that we have already discussed in that Monera. Pillar 80S type ribosome. Is present. Next, the locomotory organelle that are present in these organisms. Protista मानकर locomotory organelle बा चलनांग जदि हमें देखिबा चलनांग गुड़िक cilia, flagella किंबा pseudopodia. cilia, flagella एवं pseudopodia. पिले माने जदि flagella हमें transverse section को लेके देखिबा it is having 9+2 arrangement. जोटा कि मोनेरा वाला में थारे हमें कहते हैं 9+2 arrangement is absent, but here 9+2 arrangement is present in case of protista. Then the cell division occurs by these organisms either mitosis, ubhaya, mitotically it can divide, mitosis and meiosis. Mitotically divide होची जतबेले गैमेट तैयारी करिवो ये meiosis द्वारा divide हो so that it can produce gametes and chemosynthetic nutrition occurs. Chemosynthetic nutrition पिलाने chemosynthetic nutrition it lacks. आ पूर्व में पढ़ी थे मोनेरा माने chemosynthetic it can synthesize food from that chemical substances, but it lacks that chemosynthetic, and the examples are diatoms, euglenoids, amoeba, paramecium. There are so many examples includes in that protista. Then the next kingdom, पिलाने ये वाला second kingdom. तापर देखिला third kingdom. The third kingdom is fungi. Monera, protista, then fungi. The third kingdom. So fungi is characterized by प्रथम आम सेल स्ट्रक्चर देखा सेल स्ट्रक्चर देखिले इट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. So it includes the organisms which is multicellular and eukaryotes. So multicellular eukaryotes includes in this kingdom, that is fungi. These are heterotrophs. जदि एमनकर न्यूट्रिशन आमे देखिबा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एमनकर खाद्य ग्रहण करिबा प्रणाली हेला अन्य ऊपर निर्भर करिबे. सो हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन occurs, also saprophytic nutrition occurs in this kingdom. Tissue system is absent. Tissue differentiation. Tissue cannot be differentiated here. Tissue differentiation is absent. Tissue differentiation absent अछि, heterotrophic nutrition अछि, multicellular organism माने eukaryote as they contain true nucleus, and cell wall is made of माने cellulose नहीं, cell wall is made of a polysaccharide named as chitin. So cell wall is formed of rigid chitin. Symbiotic association can also be observed here.
पिले माने symbiotic association. So this is one type of animal association where two animals living together without any harm to each. कहा को क्षति करेबेनी दी जण जाक बेनिफिटेड है. And food is stored in these organisms in the form of glycogen and fat. पिले माने एमानकर संचित खाद्य पदार्थ गुडी को ग्लाइकोजेन किंबा फैट आकार रे डिपोजिट हेकी रहे. And reproduction is asexual as well as sexual. Asexual reproduction देखा जाए पिले माने asexual reproduction ताकू कहंती without producing any gametes if parent divides to produce their young individuals. ताले एथरे different mating type दरकार नहीं. गोटे सिंगल parent बडी डिवाइड है के डॉटर इंडिविजुअल बडी को तैयारी करिवो ताहा है sexual reproduction. एवं sexuality also can reproduce their young ones by producing gametes. So it is called as somatogamy. Individual body, somatic body ba individual body can behaves like gametes. So somatogamy occurs in this. The best example is penicillium. पिले माने आपुरी बढ़िया एग्जांपल होचे आमे दैनंदिन जीवन रे खाद्य भाव रे ग्रहण करथिबा मशरूम इज द वन ऑफ द इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ दैट kingdom, fungi. So the next kingdom is fourth kingdom, that is plantae. Kingdom plantae. So this kingdom is characterized by, it includes that multicellular eukaryotic organisms, multicellular and eukaryotes. So it includes multicellular and eukaryotic. Also multicellular eukaryotic organisms. पिले माने ग्रोथ जदि आमे देखिबा ग्रोथ हैला एमानकर इंडेफिनाइट ग्रोथ नो इंडेफिनाइट गछ माने केते बात बढ़िले ऊपर बुझबे. सो इंडेफिनाइट ग्रोथ एंड इरेगुलर बॉडी फॉर्म्स. आबे जदि सब प्लांट माने को देखिबा सेमानकर बॉडी फॉर्म एका भलिया नो एंड दैट इंडेफिनाइट ग्रोथ इज अकरिंग बाय मेरिस्टेम्स. इंडेफिनाइट ग्रोथ है कहा जब है बाय मेरिस्टेम्स. इट इंड्यूसेस दैट इंडेफिनाइट ग्रोथ. These are fixed or floating. पिले माने floating plant अछंती अन्य plant गुडा देखिले से माने माटी ऊपर ठिया आइछंती. So these are fixed or floating. जल जंतु माने फ्लोट करछंती पानी रे. They are producer. पिले माने they form food to all trophic levels. जदि इकोसिस्टम रा प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल बा खाद्य स्तर को हमें लक्ष्य करिबा ताले ये सर्वनिम्न खाद्य स्तर आज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड फूड टू ऑल ट्रॉपिक लेवल्स. सो दीज आर प्रोड्यूसर्स and produces food by the process of photosynthesis. Mode of nutrition is phototrophic nutrition. Mode of nutrition देखिबा जदी phototrophic nutrition, parasitic nutrition and insectivorous plants are also present. पिले माने phototrophic ताकू कहिबा those who are utilizing that energy, light energy from sun by union of that carbon dioxide and water to produce carbohydrated food by the process of photosynthesis. Parasitic nutrition कहिबा those depends upon others for their food. Cascota पिले माने these are parasitic.
So the example is coscota. Then insectivorous plant hele pitcher plant, Venus flytrap. So these are the insectivorous plant. जदि हम mode of nutrition को देखिबा पिले माने rigid cell wall एवं cell wall contains that cellulose thiba cell wall which is rigid cell wall. Centrioles are absent. जदि हम एतरे देखिबा ताहले से मानकर सेल रे centrioles are absent. Large central vacuoles are present. Large central vacuoles present. And food is stored in the form of starch. पिले माने starch होची polysaccharides complex sugar जोटे को कहबा हमें ताहले एमानकर food store हेकि रहउची in the form of starch. So starch is the storage food in case of plant. And reproduction occurs both sexually and asexually. ये मानकर reproduction जदि हमें देखिबा reproduction both asexually and sexually. पिले माने photosynthetic pigment is present. ताले chlorophyll वाला अच्छी तेणु they are included in that plantae. So the examples are bryophyta, pteridophyta, saprophytes ityadi. Then the next kingdom is kingdom animalia. Kingdom animalia. It includes जदि हमें kingdom animalia important character को देखिबा केवल it includes multicellular eukaryotes. Chlorophyll is absent. Plant मान ठारे chlorophyll अछि एमान पाखरे chlorophyll नाही. So the photosynthetic pigments are absent. Body form को देखिबा जदि एमानकर body गोटे regular body form अछि एवं growth मध्य definite. It is limited. Growth is limited and definite, and the organelles are present internally. Internal organs are present. Cell wall, plastid, and chlorophyll or photosynthetic pigments are absent from it. Centriole is present, but it is absent in case of plantae. Large central vacuoles are absent. And these are free living and motile. ये माने मुक्त भाव रे चलन करि पारंती, मूवमेंट करि पारंती. It is quick response. It is having quick response to that of stimuli. पिले माने stimuli आगुरु कहितली जे change in external or internal environment of the body जदि किछि परिवर्तन होला immediate ताको रेस्पोंड करिबार क्षमता अछि एवं it is holozoic. It is having holozoic nutrition. These are consumers. जेमिति plantae माने producers एमाने हेले consumers. पिले माने muscles cells are there which associated with movement and locomotion, and nerve cells are present to carry impulses from the आमे जदि कहिबा ताले impulse stimuli को impulse आकार रे एमाने सेंस ऑर्गन गुडी को क्यारी करिवे एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे पहुंचीबे. सो इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स. देन पिले माने वर्तमान हमें देखिबा व्हाट आर द merits and demerits of that 5 kingdom classification. आ पूर्व 6 kingdom classification कहि सारी छी. ताले पिले माने डिस्कस करबा व्हाट आर द डिफरेंसेस
what are the merits and demerits? ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करागला फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तार मेरिट कौन डिमेरिट पिला माने जब हम मेरिट देखिबा ताहले प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली कारण प्रथम देखिले मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर then eukaryotes are separately placed in other kingdoms then it gives better placement to controversial organisms controversial बा विवादीय प्राणी ताको कहबा यूग्लिना भलिया controversial organisms माननको placed करबा पई it will be better or easier then grouping of unicellular eukaryotes in protist solved many problems अनेक गुड़िए प्रॉब्लम को ये सॉल्व कराउची सो इट इज सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स बाय ग्रुपिंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन प्रोटिस्टा रखिला यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नेक्स्ट कथाला फंजी सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्रोटिस्टा फंजी को सेपरेट करागला प्लांट रो अलग करागला एवं प्रोटिस्टा रो ମଧ୍ୟ अलग करागला So fungi separated from plants and protista. Then the most accepted system of classification जब हम कहिबा ताहले ताहा होची five kingdom classification. So it is the most accepted, universally accepted that five kingdom classification. It is one of the most advantages of that five kingdom classification. It reflects better relationship among organisms जदि हम प्रत्येक organism को जदि हम लक्ष्य करिबा सेमानक भितरे relationship को explain करूची five kingdom classification. It is based on many complexity of cell, mode of nutrition and phylogenetic relationship cell रा complexity अनुसार mode of nutrition अनुसार अलग करा है एवं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप माने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को देखि एमान को मध्य अलग करा जायछि सो इट इज दीज आर द मेरिट्स ऑफ दैट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ताले गोटे जगह मेरिट अछि माने सम सॉर्ट ऑफ डिमेरिट्स आर देयर ताले डिमेरिट गुडी कहला पोजीशन ऑफ वायरस इज नॉट क्लियर पिले माने आ पूर्व क्लास रे मु कहितली वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एवं एथिरे कोनोसी स्पेसिफाई करा जायनी भाइरस मानकर पोजीशन विषय तेणु ताहा होची डिमेरिट सम ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा रखा जायछि लाइक दैट ऑफ डायनोफ्लाजेलेट्स दे आर कमिंग अंडर प्रोटिस्टा बट दे आर नॉट यूकैरियोट्स यूकैरियोट नहंती किंतु प्रोटिस्टा थिबा ऑर्गेनिजम गुडी कहले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक then next demerit is archaebacteria differ from bacteria but placed in same kingdom पिले माने archaebacteria रे जो बैक्टीरिया माने एडवर्स कंडीशन रे बा ऑप्टिमम कंडीशन रे बंची पारिबे सर्वाइव करि पारिबे से माने छथि archaebacteria they are differ from that bacteria but placed in same group ताले मोनेरा रे रखा गला सेम किंगडम रे तेणु ताहा मध्य डिमेरिट and last one is the unicellular yeast are placed in multicellular fungi yeast hela unicellular taku rakha hai chi multicellular kingdom re fungi re so students today also I am giving some questions which will be answered by you and the answer I will publish in my next video. So let us come to the question session. Let us come to the question session. पिले माने आगु क्वेश्चन ए भलिया दिया जाइतला एवं एटा एथरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि जहा कलेक्ट करा है छै प्रीवियस नीट क्वेश्चन नीट पैटर्न रो बा अलगा एग्जाम गुडी को तर फर्स्ट क्वेश्चन हैला माइकोप्लाज्म आर क्लासिफाइड अंडर व्हिच किंगडम गो किंगडम रे ये क्लासिफाई करा जाय छै second is members of kingdom protista are primarily of dash habitat protista mananकर habitat बा वासस्थान होते sexual reproduction in fungi occurs by dash
who crystallized and isolated virus from for the first time. An association between roots of higher plants and fungi is dash maximum nutritional diversity is found in which kingdom? को kingdom रे maximum बा विभिन्न प्रकार रो nutrition अछि, nutritional habit अछि. Puff ball पिले माने काठरे जो छतु हुए puff ball belongs to which kingdom? Saprophytic nutrition is found in which kingdom? Saprophytic पिले माने saprophytic हैला जे dead organism मानन कठार खाद्य ग्रहण करे. Then dead organism का dead plant phytic नाले saprozoic हैला animal है जो dead animal. Six kingdom classification is given by dash. वो वीडियो प्रारंभ में कहते six kingdom classification is proposed by dash. Which kingdom is believed to be ancestor to all other life on earth? पृथ्वी रे जते सब जीवन अछि तार ancestor कि को kingdom को विश्वास करा जाए ancestor बोली. So students, this is all about my video. So the winner's name will be in my next video. So thanking you all.